Good morning, students. I hope you all are doing well at your places. And again, today we'll be coming up with a new chapter that is three questions of a king. So let's just begin. What are the three questions of the king? And apart from that, I hope you all are doing reading at your places. So let's just begin. About this chapter. In this chapter, there was a king who believed that he would never fail if he knew the answers to these three questions. See, in this chapter, this king knew that if he will answer all these three questions, then he will never fail in his life. Right. So to find out the answers, the king sent the messenger throughout the kingdom. Kingdom में उनको messengers को भेजा to know about the answers with a guaranteed reward कि हाँ आपको guarantee reward मिलेगा, which was a very handsome amount of money. You can say एक अच्छा खासा amount. And however, the wise men who came forward, they were unable to answer his questions correctly. कि वो उनके answers नहीं कर पा रहे थे उनके questions. So let's just begin about this. One day it occurred to a certain emperor. एक certain emperor के साथ क्या हुआ? Only if he knew the answer of these three questions, he would never strain any matter. कि अगर एक एम्परर के साथ ये हुआ कि अगर वो उन्हें तीनों क्वेश्चंस का आंसर पता होगा तो ही विल नेवर स्ट्रेन एनी मैटर, मींस उसको किसी भी मैटर के बीच नहीं लाया जाए. द फर्स्ट इज व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू डू ईच थिंग. हर चीज को करने का सबसे ज्यादा बेस्ट टाइम क्या होता है. व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल टू वर्क विद, कि वो कौन से पीपल है, बहुत इंपॉर्टेंट पीपल है जिनके साथ आपको काम करना चाहिए. देखिए ये मोस्ट है, is the superlative degree of adjective. And the third one, what is the most important thing to do at all times? सारे टाइम में सबसे ज्यादा important चीज करने के लिए क्या है? So these were the three questions that were asked right now. The emperor issued a decree to his kingdom. Decree means एक order आ चुका था अब उसके kingdom से that whosoever will would be able to answer these questions will receive a huge award. उसको award या फिर reward मिलेगा. Many who read the decree made their way to the palace at once, and each person answered his questions differently. Everybody was trying to answer all these questions very different. Now, in reply to the first question, one person advised. एक first question के reply में एक बंदे ने क्या बोला? The emperor make up to his schedule, uh, कॉन्सिक्रेटिंग एवरी आवर अ डे, मतलब हर घंटे हर दिन हर मंथ कुछ ना कुछ जवाब आने लग गए फॉर अ सर्टेन टास्क, एंड देन दे फॉलो द शेड्यूल, और फिर वो धीरे धीरे शेड्यूल फॉलो करने. ओनली देन दे कुड होप टू डू एवरी टास्क एट द राइट टाइम, कि सारा का सारा टास्क क्या हो, एकदम राइट टाइम पे हो. राइट नाउ another person replied that it was impossible to plan in advance, कि एडवांस में प्लान करना चीजों को इट्स वेरी इम्पॉसिबल. देन द एम्परर शुड पुट ऑल वेन अम्यूजमेंट. ऑल वेन मीन्स एकदम ब्लैंक हो जाना, एंड रिमेन अटेंटिव टू एवरीथिंग इन ऑर्डर टू नो कि व्हाट टू डू एट व्हाट टाइम, कि भाई दे वर जस्ट पेइंग अटेंशन कि आप क्या कर सकते हैं एक टाइम पे. राइट नाउ समवन एल्स from the emperor, he insisted that by himself the emperor could never hope to have all the foresight and competence necessary, कि हाँ भाई आपको आंसर करना ही करना है, कि when to reach each and every task, कि कब आपको उस टास्क पे पहुंचना चाहिए. when he really needed to set up a council, कि हाँ भाई इस टाइम पे हमें काउंसिल को एडवाइस कर देना चाहिए, काउंसिल बिठानी चाहिए कि हम एक अच्छी एडवाइस ले सके ऑफ द वाइज, एंड देन टू एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर एडवाइस, कि भाई काउंसिल ने जो बोल दिया हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे. कुछ लोग कहा कि सर्टेन मैटर्स रिक्वायर्ड इमीडिएट डिसीजन, कि कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको क्या होता है, इमीडिएट डिसीजन देना होता है, एंड कुड नॉट, यू कैन नॉट वेट फॉर द कंसल्टेशन, कि आप कंसल्टेशन के लिए वेट नहीं कर सकते. राइट बट इफ वी वांटेड टू नो इन एडवांस, अगर हम एडवांस में ही जानना चाहते हैं चीजों को, was going to happen, he should consult the magicians and soothsayers. Soothsayers means ये जो पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं ना चीजों को, और मैजिशियन जादूगरी लोग होते हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए. नाउ द रिस्पॉन्स टू द सेकंड क्वेश्चन वाज लैकिंग accord. Accord means agreement. लोगों का जो तालमेल था क्वेश्चंस देने का, इट वाज नॉट एट ऑल इन एग्रीमेंट. राइट नाउ one person said the emperor needed to his place all his trust in administrators. सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स को ट्रस्ट करते हुए उसने बोला. अनदर अर्ज रियलाइज, भाई दूसरों ने क्या कहा कि आप प्रीस्ट या फिर मॉन्क से पूछ लीजिए, कुछ ने कहा कि आप फिजिशियन से पूछ लीजिए, एंड स्टिल अदर्स दे पुट देयर फेथ इन वॉरियर्स. उन्होंने कहा कि योद्धाओं से पूछ लीजिए.
थर्ड क्वेश्चन को सिमिलर वैरायटी ऑफ आंसर्स मिले, बहुत सारे लोगों ने थर्ड क्वेश्चन का आंसर सेम दिया. So someone said that science was the most important pursuit. Science ही है वो बहुत ही ज़्यादा suitable thing. Other insisted on the religion, whereas another insisted कि क्या है, military skill है. Everybody was just answering in his own way. Now, the emperor was not pleased was with any of the answers. The emperor was not at all pleased. The reward कोई भी नहीं मिला. No reward was given. And after several nights of reflection, several nights चली गई, कुछ रातें बीत गई. He resolved to basically emperor resolved to visit a hermit. Hermit वो लोग होते हैं जो झोपड़ियों में रहते हैं. Who lived on the mountain and was said to be an enlightened man. कि वो कैसा है? Enlightened man है means अपने टास्क में बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से करता है. So the emperor he just wish to find the hermit. Hermit is the one who resides in a hut, right? To ask him these three questions, though he knew कि hermit will never left the mountains, कि hermit कभी भी अपनी झोपड़ी को छोड़ के mountains को छोड़ के आंसर देने के लिए आएगा, and it was known to receive the poor and the refusing to anything to do with the persons of wealth and power. Means hermits are those people who are not interested in the wealth and power of anybody. So it will be very impossible for him to drag to the emperor, right? So the emperor disguised himself as a simple peasant. एम्परर ने खुद को भी डिस्गाइज मीन्स अपनी असली आइडेंटिटी को छुपा देना और खुद भी क्या बन गया, एक साधारण सा पीजन बन गया, काइंड ऑफ अ फार्मर, एंड ऑर्डर्ड हिज अटेंडेंट टू वेट फॉर हिम आउटसाइड, कि उसके साथ ना आए ताकि ये ना दिखे कि कोई फेमस पर्सनालिटी आई है. एट द फुट ऑफ द माउंटेन व्हाइल ही जस्ट क्लाइंब टू द स्लोप टू सीक द हर्मिट, हर्मिट से मिलने के लिए. नाउ reaching the holy man dwelling place, dwell means to live at that place. This is a very important word. It comes in unseen passages. This, escape, opportunity, several words which I have explained you. The emperor found the hermit digging a garden. What was hermit doing? He was already digging a garden in front of his hut. अपनी hut के सामने. I already told you hermits are those people who resides in hut, right? When the hermit saw the stranger, जब ऐसे ही hermit ने stranger को देखा, he nodded his head in greeting. जिसे हम मुंडी हिला के अपना सर घुमा के नमस्ते कर देते हैं. He was kind of that and continued to dig. और अपने काम में he was totally continued. The laborer was obviously hard on him, means he was doing very hard work at that time, and he was an old man, and each time he thrust his spade into the ground to turn to the earth, he wept heavily. मतलब हमेशा अपने स्पेड को धरती पे लगा रहा था, अर्थ पे, और वापस से वही, मतलब he was digging at that time, right? So the emperor approached him. Emperor उनके पास आया and said, I have come here to ask you to help me with these three questions. So what is the best time कि आप ये सब कर सकते हैं? Who are the most important people to work with? कौन है वो सबसे important people जिनके साथ आपको काम करना चाहिए? What is the most important to do these things at all the time? सारे टाइम पे वो कौन सी important चीजें जो करनी चाहिए? The hermit listened attentively, बहुत ही ध्यान से सुना, but he only patted the emperor on the shoulder and continued digging. उसने सिर्फ उसको shoulder पे ऐसे थपथपाया and he just continued doing his work. Emperor said, "You must be tired. तुम शायद थक गए होगे. Please let me give a hand with that." कि मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ. देखिए, give you a hand with that means, this give you a hand means to help someone. This is a very important muhavra. It's an idiom. Okay. So the hermit thanked him. No, I can do it myself. The emperor handed the emperor the spade, then sat down on the ground to rest. He himself sat down to be rest, and he handed the spade to the now. After he had dug दो rows उसने dug कर ली. The emperor again turned to the hermit and repeated all those three questions. And the hermit did not answer, but he just instead stood and pointed to the spade. वापस से he started doing his work. Why don't you rest now? He's saying कि तुम थोड़ा आराम क्यों नहीं करते हो? I can take over again, कि मैं वापस से कर सकता हूँ. But the emperor he just continued to dig. Right. 1 hour passed, then two, and finally the sun began to set behind the mountains. शाम होने लग गई, and he was continuously doing. The emperor put down the spade and said to the hermit, से बोलने लगा, I came here to ask you if you could answer my all these three questions that I have asked you. So if you can't give me any answer, please let me know. I'll just move from this place. I can go out on my way. मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा. The hermit lifted his head and asked the emperor, do you hear someone running over there? The emperor turned his head.
ये तुमने देखा है किसी को वहां पे भागते हुए? तो द एम्परर ही जस्ट टर्न्ड हिज हेड, अपने मुंह घुमाया और देखने के लिए। They saw a man with a long white beard emerge from the woods. वुड का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से उसने देखा कि एक व्हाइट कलर का बियर्ड मैन, व्हाइट बियर्ड मैन वाज कमिंग आउट। ही कैन वाइल्डली प्रेसिंग हिज हैंड्स अगेंस्ट द ब्लडी वुंड इन हिज स्टमक। एक्चुअली ही वाज हैविंग, तो चोट लग गया था उसके स्टमक में। द मैन रैन टुवर्ड्स द एम्परर के पास आया एंड बिफोर फॉलिंग अनकॉन्शियस टू द ग्राउंड। देखिए दो माइंड्स होते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड जिसपे हम अभी काम कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड वो होते हैं जिसमें हम बहुत ही ज्यादा डे ड्रीमिंग और सोचते रहते हैं कि वी विल बी डूइंग दिस, वी विल बी डूइंग दिस, फलाना डिमाका, वट एवर स्टफ दैट कम्स इन टू आवर माइंड, फैंटेसी वर्ल्ड, उसको हम कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। ये सब until he was, मतलब like unconsciously he just fall into the ground and when he lay groaning, groaning means कुछ आखिरी के like आवाज निकल रही थी। opening the man clothing, उसने बंदे का क्लोथ खोला जो कि he was tied on the stomach. The emperor and the hermit saw the man had received a deep gash, कि उसको बहुत ही ज्यादा चोट लग गई है गहरे में। The emperor cleaned the wound thoroughly, उसने बहुत अच्छे से हर जगह से कि वुंड को साफ करके बोला, एंड यूज्ड हिज ओन शर्ट टू गिव द बैंडेज, अपनी शर्ट से उनको बैंडेज लगाया। बट द ब्लड वाज completely soaked in within the few minutes because the bleeding was taking at a very fast pace. So he rinsed the shirt out and bandaged the wound at the second time. उसने निचोड़ दिया अपने शर्ट को और वापस से उसको बैंडेज के जैसा बांध दिया। रिंस कहाँ गया? रिंस, कपड़ों को हमेशा रिंस किया जाता है। आप देख सकते हैं आपकी मॉम्स, दे आर यूजिंग द मशीन्स टू फॉर द वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, तो शी यूज टू रिंस द क्लोथ्स। कपड़ों को ड्रायर में जो करती है कपड़े, वो उसको क्या बोलते हैं? रिंस। एंड बैंडेज द वुंड फॉर द वेरी सेकेंड टाइम एंड कंटिन्यू टू डू सो अंटिल ब्लड जो है ना बंद नहीं हो गया। Now, at last the wounded man regained consciousness. अब वो अपने होश में आने लगा and asked something to drink, कि मुझे कुछ पीना है। Now, the emperor ran down to the stream and brought back a jug of fresh water. उसके लिए fresh water लेकर आया। Meanwhile, the sun had disappeared. रात हो गई, नाइट आ चुकी है, बहुत ही ज्यादा ठंड हो गई। तो hermit, with the help of the emperor, carried the woodman into the hut where they laid him on the hermit's बेड। वो हर्मिट और वो वूंड मैन और वो खुद एम्परर, वो सब उसके रूम में अंदर आ गए हट में, एंड दे वर लाइंग ऑन द हर्मिट बेड। नाउ द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइटली, आराम से आंखें बंद करके लेट गया। द एम्परर वाज टायर्ड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग डे ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन। माउंटेन क्लाइंब करके आया, डिग किया उसने, एंड लीनिंग अगेंस्ट द डोरवे ही फेल एस्लीप। दरवाजे के साथ ही वाज लीनिंग, उससे टेक लगा रहा था, एंड ही जस्ट स्लेप्ट ओवर देयर ओनली। नाउ व्हेन ही रोज द सन हैड ऑलरेडी राइजन ओवर द माउंटेन। जब वो उठा तो देखा कि सन ऑलरेडी निकल चुका है, बट ही कुड रिमेम्बर दैट वेयर ही वाज एंड व्हाट ही हैव केम फॉर, कि नाउ ही इज रिमेम्बरिंग कि मैं किस पर्पस के लिए यहाँ पे आया हूँ। वी ही जस्ट लुक टू द बेड, और उसने बेड को देखा, वुंडेड मैन को देखा और हर्मिट को देखा, इन ऑल इन कंफ्यूजन। व्हेन ही सॉ द एम्परर ही स्टेयर्ड एट हिम इंटेंटली, उसको स्टेयर करने लगा, देखने लगा, एंड देन सेड इन द फेंट विस्पर, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। फेंट मीन्स थोड़े बेहोशी में। Now, but what you have done, I should have forgive you, the emperor asked, कि तुमने ऐसा क्या किया है? For that we I have to forgive you. Now you don't know me, your majesty, but I know you. आप मुझे नहीं जानते हो, but मैं आपको जानता हूँ। I was your sworn enemy. मैं कौन हूँ? तुम्हारा दुश्मन हूँ। I had vowed to get vengeance on you for during the last war that you killed my brother and seized my property, saying that आई हैड बोर्ड, मैंने ये शपथ लिया था कि आई जस्ट किल यू। ये है लिखा ना वेगन्स, वेगनेंस मीन्स बदला लूंगा, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार दिया था। एंड यू हैव ओन सीज्ड माय प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया था। नाउ व्हेन आई लर्न दैट यू आर कमिंग अलोन टू द माउंटेन टू मीट द हर्मिट, जब मैंने देखा कि यू आर कमिंग टू मीट द हर्मिट अलोन, आई रिजॉल्व टू सरप्राइज योर ओन वे बैक एंड किल यू। मैंने सोचा कि मैं तुमको मार देता हूँ, बट आफ्टर वेटिंग अ लॉन्ग टाइम, बहुत वेट करने के बाद, देयर वाज स्टिल नो साइन ऑफ यू, तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई एम्बुश इन ऑर्डर टू सीक यू आउट। एम्बुश मीन्स मैंने अपने गुस्से को एक साइड रखा, बट इंसिस्टेड ऑफ फाइंडिंग यू, कि मैं तुमको फाइंड आउट कर लूँ, एंड केम अक्रॉस योर अटेंडेंस, और मैंने तुम्हारे अटेंडेंस से पूछा, एंड रिकॉग्नाइज मी गिविंग दिस
postpone कि मुझे ये चोट दी जाए, right? And luckily I escaped. Again I told you this word has come. Escape means to run. Very important word. And ran here, और मैं भागता हुआ यहाँ आ गया. And if I didn't met you, I would have surely be by dead by now. अगर मैं तुमसे नहीं मिलता तो अब तक मैं मर चुका होता. And I had intended to kill you. I have those bad intentions of killing you. But instead you saved my life, so I am ashamed and grateful beyond my words. Instead तुमने मेरी जान बचाई है, and I am very much shameful कि मैंने तुम्हारे लिए गलत words use किए. And if I have lived, then I want to be your servant for the rest of my life. He's saying कि अब मैं जिंदा हूँ, अब मेरी लाइफ तूने बचा दिया है, तो मैं शपथ लेता हूँ कि I want to be your servant for the lifetime with all my children and grandchildren to do the same. Please grant me your forgiveness. प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे चिल्ड्रन, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन सब तुम्हारे नौकर बनकर रहेंगे. Now, the emperor was overjoyed to see that he was so easily reconciled with a former enemy. कि इतना आराम से सब कुछ सुलझ गया उसके एनिमी के साथ. He not only forgive the man but also promised to return all the man's property. Not only forgive him, but he was also willing to give all the property back to him, and to send his own physicians and servants to wait for the man until he was completely healed. कि वो until वो ठीक ना हो जाए. Now, after ordering his attendants, कि उसने अपने अटेंडेंट्स को ऑर्डर कर दिया टू टेक द मैन बैक होम, कि वापस उसको घर ले जाओ. द एम्परर रिटर्न टू सी द hermit. Now the emperor, he just again returned to see the hermit. But before returning to the palace, emperor wanted to repeat these three questions one last time. For returning to the palace पे जाने के से पहले, he wanted to ask all these three questions again. And he found the hermit. Again he was sowing the seeds अर्थ एंड हैड डग द डे बिफोर, और एक दिन पहले उसने डग किया था, नाउ उसने वो सीड्स वो कर दिए हैं. नाउ द हर्मिट स्टूड अप एंड ही जस्ट लुक्ड एट द एम्परर को देख रहा है. बट योर क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड. तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का आंसर तुमको मिल चुका है. हाउ? Emperor is asking that how I get these answers. Yesterday, if you have not taken pity on my age and given me a hand with digging these beds, you would not have been attacked by that man on your way home. He's saying that if you have not waited with me, if you have not helped me, then you would have gone back and you would have shooten by him. But you have shown your willing to dig the beds for me, right? And you have taken the pity on my age, कि मेरे ऊपर तुमने दया करी, मेरी हेल्प करने के लिए किया. तो तुमने मेरी हेल्प करी उस टाइम पे, और उस वो काम करते करते लेट हो गया एंड तुम बच गए, राइट? एंड देन यू शुड हैव डीपली रिग्रेटेड ऑफ नॉट स्टेइंग विद मी. यू आर ऑलरेडी रिग्रेटिंग, तुम्हें अफसोस हो रहा था क्या, किस लिए, कि तुम यहाँ पे रहने वाले हो. बट देयर फोर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज द टाइम वेन यू वर डिगिंग इन दी बेड्स. जब तुम उस जगह पे डिग कर रहे थे, दैट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज माई सेल्फ, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन pursuit was, it was suitable कि you were helping me, right? क्योंकि तुम उस टाइम पे मेरी हेल्प कर रहे थे, इससे वो चीज होने से बच गई. Now later when the wounded man just ran up here, जब वो यहाँ पे आया, the most important time was the time when you spend dressing his wound, कि जो वो सबसे important time था जब तुम चोट पे पट्टी बांध रहे थे. You had not cared for him कि he would have died, कि वो मर सकता था. तुमने उस चीज की केयर करी, and you would have lost the chance to reconcile with him, कि तुम वापस उसके साथ reconcile करने का चांस ऑलरेडी खो चुके हो, तुम्हें ये लगता था. But likewise, this was the most important person. He was the most important person, and the most important person was that you were taking care of him. Remember that there is only one important time, और जो कि है सबसे ज्यादा आज. आज ही है वो most important time. The present moment is the only time which we have dominion. कि आज को ही आप देखिए. Most important person is always you. आप ही होते हैं who is right before you, for knowing that if you have how you will be dealing with all the other persons. And the most important person is that is the person who is just standing by your side at that time. For that alone is the pursuit of life. So this chapter was easily understood by all of you, and this chapter gives us a moral that it's all the time it's you, and all the time it's the present time. If you will
you work hard today, you will definitely get a success, a taste of success in the future. So it's always the you have to take care of yourself at every right time. You have to do hard work for your success. So it's just the present time. Aaj hi hai wo waqt. Never say I'll do it tomorrow, just say I'll do it now. So I hope you all understood. Please keep studying hard for our exam and stay blessed. Thank you.